Hello, one and all. Welcome back to another amazing yet fun session and an informative session based on reproduction in animals of CBSE class 8 as well as CBSE class 10 because they have some kind of similarities. CBSE class 10 can actually use it as their warm-up as well as ICSE 10 can use them as a warm-up. But for CBSE 8, it is pretty much a new concept. But chalo, before starting this chapter, actually, I wanted to talk about a few things. See, there are stereotypical and misogynistical comments outside in your world. Being your teacher and being your mentor, I can say, not the teacher, I'm a mentor. Being your mentor, being your bhaiya, I told you this, being your senior, tell you this. It is a completely normal chapter to talk about. You should be nothing to be ashamed of while talking about sex, while talking about your sexual health. Even I'm just saying it in front of my family. Why is it so? Because that is an integral part of your life. That is an important part of your life, and you should never, try to hide it. Because see, being typically very honest over here, one day or the other, everyone goes through this part where they have some problems related to their reproductive parts or their genitalia and all. So you should never be afraid to talk about this. Tell your family, tell your mother, tell your father, tell your brother, tell your sister, tell your best friend about it, because I know what you guys communicate nowadays. So tell your best friends about it, tell your doctor about it. Doctor should know each and everything. Okay, so that he can treat you better, he or she can treat you better. So on that note, let us start this chapter. We have reproduction in humans, I guess reproduction in animals, sorry. So before actually starting, let me give you a brief description that not every type of reproduction okay, there are two types. First is asexual reproduction and then it is sexual reproduction. ठीक है? What is the difference between them? अब देखो, नेम से ही समझ में आ रहा है कि asexual reproduction is something जिसमें sexual intercourse involved नहीं होगा, ठीक है? They don't need both male and female. Just a second, please hold on. Let me do this so that everything could be smooth and stable and nice and steady. Yeah, see now how good it is working. So you should never be afraid to talk about this, being very honest. It is okay to have some issues. You should never hide it. So they are of two types, asexual and sexual. जिसमें asexual is that one जिसमें male and females का requirement नहीं होता है, ठीक है? And sexual is that one जिसमें male and female दोनों का requirement is necessary in order to reproduce sexually. अब asexual reproduction का मैं तो नोट्स की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं ऐसे ही पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ because I have a really good grasp in this topic, because I try to educate people about their sexual health because it is important. Okay, so don't be ashamed. It is okay. It is a completely normal chapter. You might feel awkward a bit during your first sessions, but it is completely fine. It is completely okay to learn about this because you are becoming steps closer towards your teenage life, and there are some things that you would notice both in males and both in boys and both in girls. So let us start the chapter. So a section में मैंने बताया males and females are not required, whereas sexual reproduction में males and females are definitely 100% required. Asexual reproduction के कुछ examples अगर मैं बताऊं कौन कौन करता है, तो I can say किसका एग्जांपल दूं तुम लोगों को, मैं देता हूं तुम लोगों को रीजनरेशन का एग्जांपल, ठीक है? ठीक है, I'll give you an example of regeneration. रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में बेसिकली ना जो पेरेंट सेल रहता है, दिस वन यू कैन सी इज अ पेरेंट सेल, ये अगर तुम इसको 3 अलग अलग टुकड़ों में काट के अलग अलग कर दो
तो they are capable of growing into a new organisms by themselves. जो missing part है, they will be able to grow by themselves. This is basically asexual mode of reproduction. एक से देखा कैसे 3-4 टुक बन गए, इसको millions of pieces में काट दो, millions of इसके parts बन जाएंगे. That is regeneration. ठीक है, fragmentation भी similar ही रहता है. Let us not go into it. Let us look at some basic terms. ठीक है, first of all we have zygote. Then we have gametes. Gametes क्या होते हैं? Gametes are basically sex cells which are responsible for sexual reproduction. You are a fusion of two gametes, a male gamete and a female gamete. That is, male gamete क्या होता है? Male gamete is sperm, whereas female gamete is your this ovum or an egg. Ovum or egg. ठीक है, तो sperm fuses with this egg to form a zygote. ठीक है, और offspring. ठीक है, then zygote develop होता है embryo में, then embryo develop होता है fetus में. Fetus मतलब जब you are under your mom's belly, you are in her uterus, actually not in the belly, you are in her uterus. तो जब तुम उनके uterus में रहते हो, that time you are called a fetus, and at the time of birth you are called a neonate. पता है क्यों ICUs जो रहते हैं बच्चे लोग के लिए, उनको NICUs बोला जाता है? ठीक है, that is due to this only. That means neonate intensive care unit. That means neonates का जहां पर, that means newborn babies का जो ICU है उनको बोला जाता है NICU. That is neonate intensive care units. ठीक है, now let us talk about sexual reproduction में male reproductive system. ठीक है, so अब there are certain hormones and certain functions, key roles over here that I need to tell you. ठीक है, so again awkward मत होना, it is completely okay. We have the scrotum over here, we have the penis over here. One second, let me just draw it correctly because I am bad at drawing. If you don't know, you might be like, भैया आप ड्राइंग में खराब कैसे हो सकते हो, आप बायो कर रहे हो. I know मेरी ड्राइंग खराब है बहुत ज्यादा. सी I'm already struggling. ठीक है, it looks somewhat like this. ये तो साइड से हो गया. Let me draw an easy diagram for you. ये हो गया ब्लैडर. ठीक है, then इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी. then ये कुछ ऐसे दिख रहा है. then it goes like a shaft. then it is like this. ठीक है, तो this is actually a male reproductive organ. ठीक है, so as you can see, we have the penis over here, or you can say urinogenital tract over here, because urinogenital, because it passes both urine and sperm and from the same place. Now let us draw small testes over here. These testes are connected to your penis in such a manner, and there are hormones, there are glands also over here. ठीक है, so the structure somewhat looks like this. जब तुम 10th में एक्चुअली आओगे तब तुमको पता चलेगा हाउ इट लुक्स लाइक, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट गो इनटू इट. अच्छा, अब टेस्टिस का काम यहाँ पर क्या है? टेस्टिस दे मेक एन हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, they make an hormone called testosterone. Testes, they also produce sperm. ठीक है, then sperm
are teeny tiny cells that are gametes, germ cells. Now अब ये टेस्टिस यहाँ से स्पर्म छोड़ा, ये टेस्टिस यहाँ से स्पर्म छोड़ा, यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जो कि न्यूट्रिटिव फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं to the sperm so that they can they can have a little bit of lubrication, क्योंकि उनको जाना रहता है from male genetic tract to female genetic tract, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहता है उन लोगों के पहुंचने का, so they can have proper खाना पीना with them, and at the same time it is fluid medium so that easier facilitation हो सके. ठीक है, that is the function. ठीक है, that is basically what is over here. This is a sperm duct. ठीक है, so this is an male reproductive system. ठीक है, सब मैंने कवर कर दिया छोटे छोटे में. ठीक है, sperm duct and a penis, male gametes called sperms, sperm ducts carry sperm to the penis. Yes, the penis is used for ejecting sperm and also passing urine. The tail in sperm helps in movement of the sperm to reach the egg in the female. अच्छा, तुमको डायग्राम भी दिया हुआ है sperm का, तो वो भी बता देते हैं. चलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Let me draw the diagram of it. It looks somewhat like this. Then there is a tail at the end. ठीक है, कुछ इस तरह के दिखता है वो. हाँ, it looks somewhat like this. This is a sperm. ठीक है, this part is known as flagella, or you can say tail, and this part is called the head. इसमें DNA रहता है, and this is used for locomotion. ठीक है, now अब आते हैं गर्ल्स के ऊपर. लेट अस टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल. मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मेंशन्ड है, बट आई फील इट इज समवॉट इंपॉर्टेंट टू टीच गर्ल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन देयर बॉडी व्हेन दे आर ऑन देयर पीरियड्स. So let us talk about that also. First of all, let me give you a brief of what female reproductive system is. ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का दिखेगा, बना के दिखाते हैं. ठीक है, you have your ovaries over here, then you have this, and it goes like this. Correct. Just a second, guys. Okay. Yeah. So let us draw a diagram. Yeah. So your reproductive system looks somewhat like this. Okay. This part, let me draw it more clearly. ठीक है, this is an example of female reproductive system. ठीक है, तो क्लास 10th में आओगे तो और अच्छे से पढ़ोगे कैसे होता है. ठीक है, दिस इज यूटेरस. ठीक है, दिस इज वेजाइना. ठीक है, दिस इज ओवेरी, दिस इज ओविडक्ट. ठीक है,
यहां रहता है एंडोमीट्रियम वॉल। ठीक है, अब सी व्हाट हैपेंस इज दैट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी रहती है ना, वो हर मंथ एक एग रिलीज करती है एवरी 28 डेज में इनसाइड योर यूटेरस। सो ओवरी आके यहाँ पर रुकता है, एग आके यहाँ पर रुकता है, जो मैंने व्हाइट छोटा सा डॉट बनाया है, फॉर द स्पर्म टू रीच देयर। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होता है कि अब तुम्हारा पूरा, अब जैसे जस्ट इमेजिन किसी का शादी रहता है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना सब चीज के लिए कि दूल्हा दुल्हन रहेंगे, शादी होगा, एवरीथिंग विल हैपन। इन द सेम वे ओवरी जब एक फीमेल जर्म सेल को रिलीज करती है, दैट फीमेल जर्म सेल वेट्स फॉर द मेल जर्म सेल टू कम एंड फर्टिलाइज दैट थिंग एंड फॉर्म अ जाइगोट। बट कभी कभी केसेस में ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, हर मंथ में द स्पर्म डज नॉट रीच द egg of females. So what instead happens over here is that जो फीमेल्स का जो यूटेरस है, उसका जो एंडोमीट्रियम वॉल्स वगैरह था, जो वो प्रिपेयर करके रखा था अपने आप को कि ठीक है अब ये आएगा, अब हम लोग बेबी प्रोड्यूस करेंगे एंड बेबी रहने वाला अंदर, तो उसका जो व्यवस्था कर रहे थे उन लोग, दैट हैपेंस। ठीक है, अब सून ओवर क्या होता है, जैसे ही नहीं आता तो एग जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो दैट एग जो मैंने ड्रॉ किया था छोटू सा वहां पे, ये देखो ये छोटू सा एग, ये मर जाता है, दिस डाइस। ठीक है, ये मरेगा तो ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा कि ये मर चुका है, स्पर्म नहीं आया है। तो ये क्या होगा, ये जो पूरा एंडोमीट्रियम है, ठीक है, एंडोमीट्रियम का इसके ऊपर एक लेयर रहता है, दिस इज एंडोमीट्रियम। ठीक है, देन दिस इज मायोमीट्रियम, देन दिस इज पेरीमीट्रियम, ये सब है आगे 10th 11th 12th। ठीक है, यू कैन से इनर लाइनिंग एंड मस्कुलर लाइन करेंटली। ठीक है, तो दिस थिंग ब्रेक्स डाउन, अब ये ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड निकलेगा, साथ में स्मेल आएगी। ठीक है, देन उसके साथ ही साथ में डिस्चार्जेस रहेंगे। ठीक है, ये पीरियड चलता है 7 days के लिए। ठीक है, तो कभी कभी डेली ब्लीडिंग होता है, कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लीडिंग होता है, दैट इज completely normal. You have you don't need to worry about it at all, because that is a phase which every girl goes through in her life. So that is completely at all normal. ठीक है, that is nothing to be worried about. Even your mother, even your grandmother, even your great grandmother, your school की teacher, then every female, ठीक है, every female in general has gone through this thing and it is pretty much very okay. ठीक है, nothing to be worried about. It is just a normal biological process that occurs in every female. ठीक है, in general, be it animals, be it human beings. ठीक है, even dogs, जो female dogs रहते हैं ना, they also menstruate. So it is completely okay. That is completely normal. You should not worry about it at all. Now, आजकल तो world इतना open हो गया, you can find out many things about your menstrual cycles on YouTube and by various doctors. So you don't need to worry about that. We also have counselors. You can talk to them if you feel any kinds of issues. Okay. So this is the function of female reproductive part. Now, fertilization में क्या होता है? Fertilization में basically, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ fertilization में क्या होता है. See, this is a female egg. ठीक है, this is a male germ cell. ठीक है, ये आया, इसके साथ मीट किया, ये अंदर गया, ये अपना डीएनए भेजा। ठीक है, एंड इसका जो डीएनए था उसके साथ कंबाइन करके ये एक बेबी बना देता है। ठीक है, डेफिनेशन बोल दूं? डेफिनेशन बोल देते हैं, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये एग था, ठीक है, ये स्पर्म बाबा है, ये दोनों का जो फ्यूजन हुआ, मतलब इनका जो मिलाप हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। Now, fertilization are of two types. It can be internal or it can be external. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अभी पढ़े, ठीक है, पीनिस जाएगा वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, स्पर्म छोड़ेगा, बाहर आएगा, इट विल मीट विद ओवरी टू फॉर्म अ बेबी, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन व्हिच occurs inside the body is known as internal fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, व्हेन
the ovum, sorry, yes, when the ovum or the egg is taken out from the female body, sperm is taken out from the male body, they both combine and they form a baby outside their body in an IVF, that is in vitro solution, that is known as external fertilization. Okay? Now, this is done, this is done. IVF के through होता है, common example given in your NCERT. Now, एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो मैंने बताया जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है, जब टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं बॉडी के. नाउ अब आता है यहाँ वीवी पैरस एंड ओवी पैरस का कॉन्सेप्ट. सिंपल सिंपल याद रखो, ठीक है. वीवी पैरस, ठीक है, मतलब ये बच्चे देंगे, मतलब या कैसे याद करोगे तुम इसको? अच्छा, पहले ओवी पैरस देख लो, ठीक है. ओवी पैरस किससे स्टार्ट होता है? ओ से, ठीक है. ओ से क्या याद करो? ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच क्या है? बर्ड. बर्ड्स क्या देती है? एग. तो ओवी पैरस एनिमल्स क्या देंगे? दे विल गिव राइज टू एग्स, देन एग से उनके बच्चे निकले. वीवी पैरस ऑन द अदर हैंड दे ले यंग वंस. एग्जांपल लिख देना, यू हैव मेनी एग्जांपल, बर्ड्स, ह्यूमंस वगैरह 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 सब लिख देना, ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स सिर्फ डेफिनेशन, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है. सो दिस वाज ऑल which is to be covered in our session. I guess budding and cloning है, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है, क्या होता है. See, budding में ये asexual reproduction है, sexual में मत काउंट करना. This is asexual mode of reproduction. First of all, we have budding. अच्छा, मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे फीमेल्स में. सो दे रिलीज ओएस्ट्रोजन एंड दे रिलीज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. सो दे रिलीज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स नोन एज ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सेम वे में मैं तुम 9th में हो, तुमको एक बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है इन योर व्हेन समवन इज प्रेग्नेंट, कि उनको लड़का होगा कि लड़की. ये जस्ट ऐसे फन है, आप करने मत चले जाना. सो आओ बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है. अभी पढ़ लेते हैं बडिंग के बारे में. सो बडिंग ऑकर्स इन ईस्ट कॉमनली, ठीक है. कैसे होगा? देखो, बडिंग में क्या होता है? एक ईस्ट है, इसके ऊपर एक और बड बनेगा, एक और बनेगा, एक और बनेगा, ऐसे बन बन के ये डिसअटैच हो जाएगा. देन ये सब अलग अलग रह लेंगे, ये अलग हो जाएगा, देन फिर ये अलग अलग फिर से ऐसे कॉलोनीज फॉर्म करके ये पूरा ग्रोथ हो जाएगा इनका, ठीक है. बडिंग इज बेसिकली डेवलपिंग अ बड, दिस इज नोन एज अ बड, जो कि आगे फर्दर ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है. यू हैव बाइनरी फिशन. अच्छा, फिजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना, ठीक है. कैसे याद करोगे? फिस का फ्यूज करना, ठीक है. फ्यूज करना मतलब किसी चीज को जोड़ना होता है, राइट. तो उससे फ्यूजन याद कर लो. फिस मतलब किसी चीज को तोड़ना, फिजी रहना, ठीक है, मतलब टूट रहा है ना. जैसे बोलते दैट पर्सन इज वेरी फिजी विथ हर वाइफ, वी से नो कि उसका और उसके वाइफ का रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं. तो सेम वे यू कैन लर्न बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन, इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स. दैट इज इट, खत्म, बस इतना. अमीबा, अमीबा बोलते हैं ना, काई, ऐसी वो करता है. ऐसी एक तो मल्टीपल फिजन फिजन भी रहता है जिसमें प्रोटोजोआ, ठीक है. ये क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है एंड ये सब अलग अलग डिवाइड हो जाता है. अभी के लिए वो मत पढ़ो, बाइनरी पढ़ो, वो 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग इज बेसिकली द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल. मतलब जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, ये तुम्हारा क्लोन है, ठीक है. तुम्हारे में जो डीएनए रहेगा सेम इसके में भी रहेगा. तुम्हारा जो कलर रहेगा, फेस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग would be exactly the same. That is known as cloning. So I hope you all liked this video. Do like, share and subscribe.
to Vigilantes YouTube channel, that is Vigilante for students and by students. I wish you all the best for your examinations. As always, stay healthy, stay safe, stay protected. Until next time, bye bye.